Am I audible and visible, please? Am I audible and visible, dear students? All clear, very good. So welcome to PW platform. Very good evening to all of you again. चलिए, very good, all clear. We'll start the today's session, very important one. जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि फाइल सिस्टम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जहाँ पर स्टूडेंट्स को जनरली डिफ़िकल्टी फील करते हैं. So in that regard, I am going to touch upon very important aspects, implementation aspects, use of file system design, file system implementation. ठीक है? So we look into basically the allocation methods, जो implementation का एक बहुत important aspect है, और फिर 3 allocation methods है, contiguous and linked plus indexed, और फिर उसके बाद यूनिक साइनोड स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम, और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है? दैट विल बी द एजेंडा ऑफ दिस. ऑफ कोर्स इन एडिशन टू दैट देयर आर अदर टॉपिक्स आल्सो इन फाइल सिस्टम, बट बीइंग क्रैश कोर्स सो वी हैव टू बी कंटेंट सेटिस्फाइड विद दिस एस्पेक्ट्स विच आर टू इम्पॉर्टेंट. और ये बेसिस पर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं. सो इन दैट रिगार्ड, या हेलो सत्यम. So let us begin our discussion today. ठीक है? Agenda will be file and directory concept, file allocation methods. So straight away we will begin our discussion with the design aspects. So the topic is file system. ठीक है? Now before we start, I would like to tell you that file system is the visible part of operating system. This is the first point you should understand. It is visible part of OS. That means among all the components of operating system, जब आप पूरे components लेंगे operating system के, the only part of OS which is visible to human eye is file system. See, you cannot see process. आप क्या process देख सकते हो memory में? नहीं देख सकते. Can you see process running on CPU? No, you can't see. Can you see process getting involved in deadlock? We can't see. We can't see synchronization. We can't see memory manager. We can't see virtual memory manager. We can't see scheduler. No component of operating system is visible except file system. You can see file system का मतलब यहाँ पर I am tracking, like you can see the contents of file, you can see the directory structure. In that regard we say file system is the visible part of operating system to human eye. Generally I say that file system is a separate topic in operating system, लेकिन a part of it is also there in CO under the topic of device management. So that is why I generally name the topic as file system and device management. Because essentially file system is meant for managing a device like secondary storage, majorly hard disk. So where exactly, what is the exact place of file system? पहले वो understand करेंगे. So at the outset I would like to tell you that we have first processor, CPU, ठीक है? And let's say here we have the hard disk, here disk. Because file system is a software to manage the secondary storage device like disk. तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, right, कि what is the exact place of file system, what is the need for file system. This is a CPU. I hope you know, आपको पता है कि CPU is an electronic device and disk is a electromagnetic device. It has electrical components, it has mechanical elements, disk, right? And processor is a pure electronic device. तो मतलब ये है, these two devices are totally different in terms of their architectures, in terms of their make, make. Meaning,
जब दोनों कम्युनिकेट करना चाहेंगे देयर विल बी लॉट ऑफ आर्किटेक्चरल मिसमैचेस, दे कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली. तो क्या चाहिए हमें? वी रिक्वायर ए सॉर्ट ऑफ इंटरफेस, वी रिक्वायर ए सॉर्ट ऑफ इंटरफेस नाउ टू हार्मोनाइज द डिफरेंसेस बिटवीन देम. दिस इज द इंटरफेस. Generally in the terminology you also call it as controller card, disk controller card. The job of this controller card is to harmonize the differences between the processor and the CPU, right? Like examples of this controller card include your SCSI card or ID card, or presently you are taking like SATA, some form of controller card, SATA disk you say. The job of that is to manage this disk, and to run this, follow me, to run this device, the controller, to run this controller, I need a device specific software, जिसे हम लिटरेचर में बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर. जब भी कोई आप डिवाइस कॉन्फ़िगर करोगे सिस्टम को, you have to install the device driver. Yeah, good evening again to all of you. Yes, so this is the device driver that runs the disk controller. इसमें भी DMA controller भी रहेगा, right? So this is the device driver. Then before that you will have operating system, disk manager or device manager. So here I will show. This is the device manager. So when you install the disk, when you install the device driver, it gets configured under the control of device manager. So device manager is a generic part of operating system which is meant for managing, performing all device, particularly secondary storage device related activities. And before that you will have what is called file system. Before that you will have what is called file system. I will draw myself. This is the file system software. This is a hierarchy basically. File system we say is a device independent module, device independent way of accessing the files, device independent. Device driver, device manager to certain extent are device dependent. For every device I should have its own device driver, right? So this is the hierarchy. So that is why मैंने कहा आपको कि file system और device management we study them together because they are very closely binded. They are very closely binded. So from the operating system perspective, both are having a very cohesive binding among them, right? So file system is a software for managing basically secondary storage devices. So this is the place, this is the hierarchy that we basically follow. Generally when I teach the full course, I start my discussion with the disk organization first. So I'm telling you in what order are we supposed to study, what should be the learning path for this topic that I'm telling you, even though my focus would be today for crash course on file system, लेकिन आपको एक learning path बता रहा हूँ, आप follow कर सकते हो if you have not studied file system earlier. तो पहले आप disk organization पढ़ लीजिए अच्छा, which I generally also call it as physical structure, physical geometry of disk. This is also covered in CO, physical geometry, जहाँ पर हम disk is divided into platters, platters into surfaces, surfaces into tracks, right? Tracks into sectors or blocks, ठीक है? The concept of cylinder, the concept of addressing, all that comes under disk organization. ये आप थरो रहना चाहिए, ये बेसिस पर भी पहले काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो दिस इज ऑल्सो a very important aspect. Disk organization is nothing but physical formatting. This physical formatting. इसके बाद second aspect which you have to study is logical organization of disk. That deals with nothing but formatting, logical formatting. जो आप हम करते हैं for a disk, आपको पता है before organizing the data on disk we format the disk with some file system. क्या आप मुझे लिखकर बता सकते हो in the chat box
what are the general popular file systems that we use for formatting our disk? Generally, names of file systems पूछ रहा हूँ मैं. What are the file systems that we generally use for formatting our secondary storage media like hard disk, pen drive, DVDs, etc.? Tell me please. बोलिए. What are the names of the file system? Can I know? Do you know it? Come on. I hope you know it. Yes, FAT32. Very popular file system. If not FAT32, what are the other file systems? Are you aware of what are the other file systems? Yes, NTFS, very correct. So here let me just talk about. The most popular file systems, or let me write a statement, common statement for you. Before storing the data, on disk. जब मैं यहाँ disk बोल रहा हूँ तो हो सकता है this is hard disk or maybe a pen drive or a DVD or whatever. Before storing the data on disk, it must be formatted. It must be formatted with some file system. जैसे कि आपने कहा, maybe NTFS, maybe FAT32, if not Unix file system, if not ext4, like that it goes. The list is enormous. These are the examples of file systems. HFS, that is also correct. ZFS, Solaris file system. Many are there. Some file system. तो यहाँ पर मैं अपनी एक एनालॉजी है जो आपको बताना, आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको भी अच्छी समझ में आ जाए. The purpose of file system, the purpose of formatting a disk with file system using like MTFS or FAT32 is, in my terminology, I say that it is just like putting infrastructure onto disk. Infrastructure. So when you format a disk with any file system, this file system is going to put infrastructure, logical infrastructure. That is what is my terminology. वो क्या है infrastructure? Correct, Alok Pandey, you are right. Hadoop also has its own. Distributed file systems are also there. We are talking about individual standalone machine file system like, okay. So infrastructure, it is just like putting infrastructure. And second point, if I don't format my disk with any file system, such disk is known as raw disk, RAW, raw disk. अगर हम format नहीं करेंगे disk को और data directly store कर देंगे, तो वो disk को हम बोलेंगे raw disk. It is not formatted. चलिए, अब यहाँ एक question आएगा कि sir, what is the advantage of formatting a disk? क्या advantage होगा? इसके लिए मैं आपको एक example दूंगा. In your college, for example, you have a library, a big floor library. ठीक है? The purpose of library is to store books. The books is like data, library is like disk. Books is like data, library is like disk. क्या लाइब्रेरी में आप डिस्क बुक्स लेकर जाके सीधा डंप कर दोगे? नहीं करोगे. हालांकि आप कर सकते हो. अगर आप डंप कर देंगे पूरे बुक्स विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, you will not be able to locate a book very easily. It will take a lot of time to locate a book if you don't have a library infrastructure. तो अगर आप efficient तरीके से retrieve करना चाह रहे हो कोई book, right? Easy access करना चाह रहे हो, efficient तरीके से आप access करना चाह रहे हो, then you need to put infrastructure in the library. क्या है infrastructure? You have to put bookshelves, book racks, almirahs, tables, right? That library infrastructure which you see, you have to put them. In addition to that, you also need to put at the entrance of the library a sort of index. वो index आपको guide करेगा, like this is civil engineering, this is mechanical engineering, this is computer science, this is electronics, that is electrical, and so on. तो आप आएंगे, आप index पे read करेंगे, okay, CSC, I have to go into this segment. CSC में जाने के बाद वहां पर आपका एक सेगमेंट होगा, सब सेगमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम बुक्स हियर, एल्गोरिथम्स हियर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बुक्स हियर, प्रोग्रामिंग हियर, एक्सेट्रा. यू विल डायरेक्टली गो देयर एंड पिक अप. एंड उसके बाद वहां पर अगर कई ऑपरेटिंग सिस्टम के बुक्स होंगे तो फिर
आपके पास वहां पे एक फर्दर इंडेक्स होगा, ऑथर इंडेक्स, टेनेनबॉम, स्टैलिंग्स, गैल्विन, एक्सेट्रा. दिस इज द पर्पस. तो यू मे हैव लैक्स ऑफ बुक्स, तो लेकिन आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज फैसिलिटेटिंग यू टू लोकेट द बुक एंड कम टू द पॉइंट डायरेक्टली फॉर एफिशिएंट एक्सेस. दिस इज द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. Exactly analogously, the file system on disk play the role of infrastructure. To organize your data more effectively so that retrieval can become, searching retrieval can become efficient. That is the purpose of file system. So it is going to put logical data structures on disk. That is called infrastructure in my terminology. Of course textbook में नहीं है, लेकिन मेरी terminology में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. That is the purpose of file system. तो हमें यह स्टडी करना है इन जनरल. एनी फाइल सिस्टम यू टेक, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स लाइक NTFS, FAT32, एक्सेट्रा, व्हेन यू बेसिकली फॉर्मेट ए डिस्क विथ एनी फाइल सिस्टम, तो क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता दूंगा सो दैट यू कैन हैव सम क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर दिस एज योर डिस्क, let's say this is our disk. Point number one, we generally divide the disk into logical units called partitions. Partitions are designated with drive letters. आपने देखा होगा C:, D:, E:. These are called partitions. Partitions are also called volumes. Some people even call it as mini disks. We divide the disk into logical units called partitions. There are some system utilities, like for example, I'm telling one such utility is fdisk, like df or fdisk, so on. Fragment the disk, divide the disk. This is logical, this is not physical. Logical. जैसे कि एक फ्लोर पे आप वुडन पार्टीशन लगाए हैं, that is temporary. उसी तरह है ये. You can remove the partition later, you can again bring the partition, so it is just like that. Yes. C:, D:, E:. These are the drive designators. आप अपना नेम भी यहां पे असाइन कर सकते हो. These partitions are of two types. Please remember this. Partitions are of two types. Primary and extended. Primary partitions are bootable partitions. These are non-bootable. बूटेबल का मतलब यह है कि प्राइमरी पार्टीशन पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो और अदर डेटा. यहां पर सिर्फ डेटा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. और अगर मान लीजिए आपकी डिस्क पर एक ही पार्टीशन हो तो देन इट शुड बी प्राइमरी. इफ एक ही डिस्क हो और वो एक पार्टीशन हो तो देन दैट शुड बी प्राइमरी. मिनिमम देयर शुड बी वन प्राइमरी पार्टीशन, या फिर आपके पूरे के पूरे प्राइमरी पार्टीशंस भी हो सकते हैं. अगर एडवांटेज ये होगा, इफ यू हैव मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशंस, आपका एडवांटेज ये होगा, you can store one operating system here, a second operating system here, third operating system here. Such a computer having a disk with multiple operating system loaded on different partition is generally called multi-boot computer. Multi-boot computer. Having multiple operating system, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे operating system पर एक साथ work कर सकते हो. No. At a time you can load only one operating system. जब आप system boot करेंगे, system आप जब boot करेंगे, तो then it will provide a list, right? 1, 2, 3. These are the 3 operating systems available. आपको option दिया जाएगा कौन सा operating system आप load करना चाहोगे. अब if you select one, then it get loaded. उसके साथ एक counter start करेगा वो. So if within count, if you make a selection, it will do it. Otherwise, it will load the operating system from the first primary partition, whatever it is. It will load it into main memory. Booting starts. Okay? So that first I will show you the structure where that booting part of the operating system will be stored. तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप डिस्क को पार्टीशंस में डिवाइड कर लेंगे तो एवरी पार्टीशन मस्ट बी फॉर्मेटेड विद फाइल सिस्टम. मे बी यहां पर आप NTFS से फॉर्मेट किए होंगे, मे बी FAT32, मे बी हियर सम अदर फाइल सिस्टम, यूनिक्स फाइल सिस्टम, समथिंग लाइक दिस. जब आप ये फॉर्मेट करोगे पार्टीशन को, what data structure it is going to create or put onto the disk, वो मैं यहां पर बताना चाहूंगा. This is the partition structure. Very important point. It is very, very important. Partition structure that get created
due to partitioning, what data structures it is going to create when I format a disk with any file system. This is a generic structure, so please follow. The very first structure that get created, data structure that get created, is called BCB. Does anybody know what is BCB? Let me check. Let me check your preparation level for GATE. There were GATE questions based on this structuring. Please remember that. BCB. What does BCB stands for? Come on, make a guess. Let me see how strong you are at guessing. The very first data structure that get created in sector 0, first sector of the disk, first sector of the disk partition, sector 0 you say, block 0, is BCB. What does BCB stands for? Correct? Very good. Boot control block. Let me write. This is called boot control block. Boot control block. BCB. Remember, if the partition is bootable, अगर ये bootable partition हो, यहाँ पर operating system हो, then this boot control block will contain the first initial part of operating system program which needs to get into memory. Like for example, जब आप boot करोगे, very first operating system program जो hard disk से memory में आएगा, like for example if it is Unix or Linux operating system, that program is called init. So हो सकता है init यहाँ पर store हो, init program. The very first operating system program which is going to bring the remaining portion of operating system, not bootstrap. Bootstrap is in ROM. ये bootstrap नहीं है, confusion यही होता है. BCB ये disk पर है, bootstrap होगा ROM में. Please understand, ROM bootstrap will load this BCB program, init program into main memory. ठीक है? That is the sequence. So don't get confused. The boot control block will contain kernel.exe, init program, the first operating system program to get loaded in memory for execution. यहाँ से आएगा. हाँ, अगर second point, मान लीजिए this partition is non-bootable. It is extended partition, non-bootable. तो ये BCB will be simply empty. आप कुछ भी store नहीं कर सकते वहाँ पे. That will be simply empty. चलिए, ये first data structure. What is the second data structure? Second data structure is called PCB. One or more sectors, one or more blocks are used for storing this PCB. PCB. Make guess what is PCB. What is PCB? In the context of the partition structure, in the context of partition structure, not process. So in the context of partition structure, what is PCB? Any idea? Any guesses? Come on. In the Upadhyay, in the context of partition structure पूछ रहा हूं मैं, process नहीं. Process में PCB is process control block. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? What will it be? What will it be known as? PCB in the context of partition structure. Correct. Get easy, you're right. This is called partition control block. Partition control block. Like for example, I'm telling you just for information purpose, boot control block is known by different terms in different file systems. Like in Unix file system, it is simply called boot block. And in NT file system, this is called partition boot sector. Partition boot sector. Sector of the partition. Name is very clear. Sector of the partition that contain booting program. Partition boot sector. Very important terms. वैसे ही partition control block in Unix file system is called super block. I don't know whether you heard or not. Partition boot sector, partition control block is called super block in Unix and Linux file systems. And in the case of NT and FAT32 file systems, it is called master file table. Master file table. This is terminology. Interviews के perspective से this is important. Master file table. But what does it contain? हमने वो नहीं देखा, अब हम देखेंगे. What does partition control block contain? As the name say, it is a control block. It is the main administrative block of the partition. अगर partition control block आपका corrupt हो गया, मतलब आपका disk is crashed.
disk is crashed. So this is the main administrative part. जैसे कि आपका कॉलेज है, आपके classrooms are like data blocks. Your administrative building, principal office, admission cell, academic cell, finance department, all that is nothing but partition control block. The partition control block keeps track of all the blocks of the partition. How many blocks are there? What is the size of block? How many blocks are allocated? How many blocks are free? How many blocks are bad? So as such, the whole information about the disk is there in PCB, partition control block. That is why it is called super block. It is giving information about other blocks, so super block. And in Windows family of operating system, we call it as master file table, master table. It gives complete picture of the disk. So that's what I said. If this is gone, disk is gone. Master file table. ठीक है? चलिए. Next aspect is directory structure. आपने पढ़ा होगा. What is directory? Directory is a collection of files. Directory is a collection of files. Directory gives information about files. Directory is a special file giving information about other files. So that directory structure. आपने पढ़ा होगा, there are different types of directory structures. We have single level directory, two level directory, multi-level directory, all that directory structure. Every file system will have some directory structure, root directory structure. So that is directory structure. That's it. These are the three parts. These are the three parts that get divided. Means this is like your S area, even though it is not just for your purpose, understanding purpose I am writing. System area. जैसा मेन मेमोरी में सिस्टम एरिया होगा, देन यूजर एरिया होगा, उसी तरह सेकेंड, दिस इज माय सेकेंडरी मेमोरी, राइट? तो सेकेंडरी मेमोरी में भी दिस इज सिस्टम एरिया. सो पार्टीशन, जब आप पार्टीशन को फॉर्मेट करोगे ना, ये डेटा स्ट्रक्चर्स एम्बॉस्ड हो जाएंगे यहां पर. मतलब सम सेक्टर, सम ब्लॉक्स आर ऑक्युपाइड फॉर दिस, 1 or 2 blocks for BCB, few blocks for PCB, few blocks or sectors for directory structure. This will be occupied. इसीलिए जब भी कोई डिस्क या पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट करोगे ना, तो उसकी जो कैपेसिटी है फॉर्मेट होने के बाद थोड़ी कम हो जाएगी. क्यों कम होगी? यही वजह है. सम ब्लॉक्स विल बी ईटन अवे बाय दीज डेटा स्ट्रक्चर्स, बाय दीज डेटा स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, PCB and BCB. प्लीज फॉलो दिस केयरफुली बिकॉज देयर वर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद है लास्ट में आपके डेटा ब्लॉक्स. लास्ट में यहां पर जो पोर्शन है आपका, ये है डेटा ब्लॉक्स. तो द एक्चुअल फाइल्स, एक्चुअल डेटा विल बी स्टोर्ड हियर. दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड लाइक दिस. दीज आर कॉल्ड डेटा ब्लॉक्स. Data of files, software, operating system software, everything will be stored here. The disk is divided into two parts. One part meant for system area, storing BCB, PCB directory structure. Other part meant for storing data blocks. ठीक है? तो यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं, when I say file system is managing the disk, means managing the disk मतलब managing these data blocks. How to keep track of them, how to allocate them, how to know whether they are good or bad. That is management related functions of file system to manage these data blocks. चलिए अब उसके आगे और बढ़ेंगे और understand करेंगे more about these data blocks. So what I will do, I will take again the section of disk and say that is data blocks. Very important part. So pay attention please. So let's say this is my data block section of disk. This is how the data blocks are represented. A very important aspect we are going to discuss now. These are all data blocks, for example. Okay. Point number one, every data block of disk, I will represent disk block or data block, DB. Every disk block of the disk or every data block of the disk, let us call it as DB, is associated with two important attributes. Is associated with two important attributes. Right? One is called DBA, the other is called DBS. Disk block address. Disk block address. And the other is called disk block size. Address is always in bits.
size is always in bytes. Disk block size and disk block address. Okay. The first address of the first block, for example, is block 0, block 1, 2, 3, 4, 5. Like that it goes. The list continues. We have an important question asked in one of the paper based on DB and DBS. मैं आपके भी पूछूंगा वो question. Let me see. For example, consider a disk having disk block address with 16 bits and disk block size 1 KB. Previous year question. Let me see whether you can answer or not. Consider a disk having disk block address 16-bit, disk block size of 1 KB. Question is, what is the maximum file size possible? What is the maximum possible files? What is the maximum file size possible over this disk? Very important question, very important concept. Over this disk. मतलब ये है, इस disk को हमने format किया. We have formatted this disk with a disk block address of 16 bits and disk block size of 1 KB. Now I am asking you, very important concept. What is the maximum file size possible over the disk? I will give you 2 minutes of time. Think it over and let me know the answer. Come on. What is the maximum file size possible over this disk? Any answer? What is the maximum file size possible over the disk? (64 MB), very correct. I'm very happy. People are telling the answers. Yes, excellent. Come on, others also please try. Yes, 2 power 16 into 1 KB, correct, that's right. See, I will give you as a formula, as a concept, remember. Maximum file size जब भी हम बोलेंगे ना, always remember that is equal to maximum possible disk size. Maximum possible disk size. This is a point you have to remember. This is a concept you have to remember. So, matlab using these specifications, we can always find what is maximum possible disk size. I am not saying maximum disk size, maximum possible disk size. Using DB and DBS. देखिए आप, disk block address is 16 bits. तो मतलब कितने blocks होंगे हमारे पास? 2 power 16. 2 power 16. Each block of what size? 1 KB. So multiply with 1 KB. This will give you maximum possible disk size. 64K into K, 64 MB. Again I repeat. Disk block address is 16 bit. 16 bit address से कितने disk blocks हो सकते हैं? 2 power 16. 64K. Each block of what size? 1 KB. So 64K blocks का size कितना होगा? 64K into 1K, 64 MB. The maximum possible disk size is 64 MB. ये possible है. Actual disk size may be less than, here I am writing. Actual or given disk size may be less than or equal to maximum possible. This is also another factor you should remember. Actual disk size may be less than or equal to maximum possible. ये specifications के साथ I can have a disk of only 20 MB possible. Actual maximum possible is 64 MB, लेकिन मेरी disk हो सकती है सिर्फ 20 MB, 40 MB, 50 MB, right? It can be like that. I can divide that disk into blocks of size 1 KB and every block is addressed with 16 bits. This is first important concept you should understand. Disk is organized in the form of blocks. Block is a unit of allocation. Let me write important points for you so that you don't miss it. So let me write it here. Disk space is organized in the form of blocks. Point number 1. Each block has disk block address and disk block size, which is same.
Second important point, unit of allocation. Unit of allocation is disk block. That means we store on disk everything in terms of blocks, meaning a file or a directory or any other data structure. Any other data structure is stored on disk in the form of files, in the form of blocks, in the form of blocks. ये बहुत important points है, please. Disk space, again I am repeating, try to understand. Disk space is organized in the form of blocks, disk blocks. Block is a logical unit. Physical aspect of that is sector on the disk, on the platter, on the surface. So blocks, जैसा हमारा main memory में we have logical memory and physical memory, उसी तरह ही है. This formatting is logical aspect, not physical aspect. So conversion होगा, disk manager will take care of converting that from logical to physical. So these are blocks. Blocks has DBA and DBS. Using DBA, DBS you can calculate what is the maximum possible disk size, and from there what is maximum file size. Second point, unit of allocation. जैसा कि अगर paging technique है, unit of allocation is frame, उसी तरह unit of allocation is disk block. You allocate the blocks and store the data. इसका मतलब whatever you want to store on disk, whether it is a file, whether it is a directory, whether it is application software, whether it is database, anything which you store on disk will always be stored in the form of blocks. Unit of storage on disk is blocks. तो मतलब ये है, listen boys and girls, if I want to store it, remember this. I want to store a file, first point, I want to store a file of size 15 KB. Over these disks, DBA 16-bit disk block size 1 KB, I want to store a file on disk, correct? तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा, I'm sorry, I have to first decide how many blocks are needed. Very simple. How many blocks are needed? Number of blocks. To store a file of size 15 KB, how many blocks of disk are needed? Can anybody tell me, please? Very simple concept. Block size 1 KB, file size 15 KB. So how many blocks of the disk are needed to store this file? Come on. How many blocks of disk? Very simple. कितने blocks लगेंगे फाइल स्टोर करने के लिए? Come on. To store a file of size 15 KB using a block size of 1 KB, how many blocks of the disk are needed? Very clear, simple, 15. मतलब फॉर्मूला देखेंगे, फाइल साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज. फाइल साइज है 15 KB, ब्लॉक साइज है 1 KB, तो देयरफॉर आई नीड 15 ब्लॉक्स. वेरी क्लियर. तो हमें चाहिए 15 ब्लॉक्स. तो यहां पर अब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क मैनेजर या फाइल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, डिसाइड करना ये पड़ेगा कि वो 15 ब्लॉक्स कौन से होंगे और कैसे अलोकेट करेंगे. हम यहाँ पे जो ब्लॉक्स है, फ्री ब्लॉक्स जितने हैं, उसमें से हम 15 ब्लॉक्स अलोकेट करनी हैं. तो कौन से 15 ब्लॉक्स अलोकेट करेंगे हम और कैसे अलोकेट करेंगे, ये मतलब है फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ फाइल सिस्टम का, एलोकेशन मेथड्स. समझ गए? दिस इज व्हाट इज नोन एज एलोकेशन मेथड्स. हम इसे बोलेंगे एलोकेशन मेथड्स, या सम टेक्स्ट बुक में आपको दिया जाएगा फाइल एलोकेशन मेथड्स या डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड्स. मतलब मेथड्स फॉर एलोकेटिंग डिस्क स्पेस, मेथड्स फॉर एलोकेटिंग डिस्क स्पेस, डिस्क ब्लॉक्स टू द रिक्वेस्टिंग फाइल्स, ये मतलब है. तो चलिए, हाउ आर फाइल एलोकेशन मेथड्स क्लासिफाइड? फाइल एलोकेशन techniques or methods, how are they classified? File allocation methods, come on. It is basically classified into two types. What are the two types? Please write it down and tell.
Exactly like memory management, exactly like memory management, file allocation methods are also classified into two types. What are the two types? Boliye, write it down in the chat box. What are the two methods? Come on, come on. चंचल, या contiguous link. मैंने टू कहा, दो कहा, आपने तीन लिख रहे हो. I have just written two. Actually are there three, but classification पूछ रहा हूं मैं, taxonomy. Yes, contiguous. जिस तरह memory management था, main memory management, contiguous, and the other is non-contiguous. Contiguous is named as contiguous itself, but non-contiguous is known as in linked allocation. Linked, यहाँ पर linked allocation. It is called linked allocation, non-contiguous. And then we have a mix of these two, third allocation, mixed of these two, that is called indexed. That is called indexed allocation. So from GATE examination perspective, learning, understanding these three methods are very important. 1, 2, 3. अगर आप ये तीनों methods अच्छे तरीके से समझ लेंगे, then you can solve the problems. जैसे कि GATE 2022 में भी एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए, राइट, फ्रॉम फाइल सिस्टम ऑन एलोकेशन मेथड्स. और उससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं. और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जनरली दिस इज ए एलोकेशन मेथड्स पर्टिकुलरली इज ए 10% टॉपिक. मतलब ये है कि ओनली 10% ऑफ द गेट एस्पिरेंट्स हु आर राइटिंग द एग्जाम विल वर्क आउट प्रॉब्लम करेक्टली, रिमेनिंग ऑल विल गो रॉन्ग. इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप टॉपिक मास्टर कीजिए. जैसा सिंक्रोनाइजेशन है उसी तरह ये टॉपिक फाइल सिस्टम की भी मास्टर कीजिए. डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, यू मास्टर इट. फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, मास्टर इट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर ऑल 10% टॉपिक्स. Disk free space management, please make it very thorough study so that you become in 10%. Okay? So this is the thing. So our agenda, main agenda of today's topic is to concentrate on contiguous allocation, non-contiguous allocation and index allocation. Particularly among these three, this is of more importance, indexed allocation. So as the name implies, contiguous. As the name implies, contiguous. कंटिग्यूस ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स चाहिए ना आपको फाइल क्रिएट करने के लिए, वो कंटिग्यूसली एलोकेट करेंगे हम. मतलब अगर मान लीजिए एक फाइल को चाहिए 5 ब्लॉक्स, so 5 contiguous blocks will be allocated. एक फाइल को 100 ब्लॉक्स चाहिए, 100 contiguous blocks will be allocated. That is the meaning of contiguous allocation. अब मैं आपको डायग्रामेटिक स्कीमेटिक व्यू में बता दूंगा, समझा दूंगा. प्लीज हैव अ लुक हियर. दिस इज contiguous allocation. Please just give a glance through. This is contiguous allocation. ठीक है? We'll make a understanding of it. This is the directory structure. Directory box. This is directory entry. So it contains attributes like name of the file, starting block, length of the file. Starting block, first block कौन सा है और फाइल की लेंथ कितनी है, कितने ब्लॉक्स है. तो मतलब starting from here, those many blocks are in use by that file. These are called directory entries. The first file, listen, the first file is by name count, starting from block number 0. How many blocks are in use? 2 blocks. Matlab 2 blocks starting from 0 are in use, 0 and 1, like that. Look at this. So this is my file 1. This is my file 1. Count. Second file है tr. Second file is tr. Second file is tr. देखिए आप. It is starting from block 14. 3 blocks are in, मतलब 14, 15, 16. यहाँ पर देख लीजिए आप. 14, 15 and 16. These blocks are in use by the file tr.
देखिए आप TR मार्क किए हैं, ये काउंट like that. Male starting from 19, 6 blocks are in use, 19, 20, 21, 22, 23, 24, like that list. Similarly it goes like that. This is contiguous allocation, very simple. अब हम क्विकली यहां पर इसके परफॉर्मेंस इश्यूज डिस्कस कर लेंगे. कंटिग्यूअस एलोकेशन के परफॉर्मेंस इश्यूज आप बताइए मुझे क्विकली. कम ऑन. नंबर 1, can this scheme suffer from internal fragmentation? Say yes or no. Say yes or no. Can there be a possibility of having internal fragmentation with this scheme of contiguous allocation? Come on, boys and girls, say yes or no. Can there be a possibility of having internal fragmentation here? बोलिए. Can this scheme suffer from internal fragmentation? Say yes or no. We may not be able to increase file size. Okay, Chanchal, you are saying, I will come to that point. पहले internal fragmentation की बात कीजिए. Yes, we can have internal fragmentation. Yes, we can have. Where in the last block जो है वो fully utilize होना जरूरी नहीं है फाइल के लिए. So it may have internal fragmentation. उसका एक simple example दे दूंगा आपको. Please see. मान लीजिए our disk block size is 1 KB. Let us assume 1 KB. Disk block address is let us say, sorry, not 1 KB, 2 KB, and disk block address is 16 bits like earlier occasion. If I want to create a file, listen, if I want to create a file with, let us say 7 KB, please tell me. Block size 2 KB, disk block address 16 bits. I want to create a size of file 7 KB. मुझे कितने blocks लगेंगे? How many blocks will be needed? Come on. How many blocks will be needed to create this file of size 7 KB? Block size 2 KB. बोलिए. How many blocks? Oh, Lalit Yadav, how is it? Come on. 4 blocks. 4 blocks are needed. First block will store 2 bytes, second block will store 2 bytes, third block will store 2 bytes, fourth block will store only 1 byte, and the last 1 KB will go waste in the last block. Fourth block will have internal fragmentation of 1 KB, is it not? That is what I am saying. Internal fragmentation in the last block may be there. ठीक है, चलिए इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इशू हो गया. अब आएंगे हम नेक्स्ट इशू पर, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, फास्ट. Can there be a potential possibility of having external fragmentation with this scheme? क्या external fragmentation हो पाएगा यहाँ पर? क्या हो सकता है यहाँ पर? Come on. Can we have external fragmentation with this scheme? Say yes or no. Can we have external fragmentation? Yes. Yes, very nice. We can have external fragmentation also. Very correct. क्यों? देखिए आप, यहाँ एक 2 blocks free है, यहाँ एक 2 blocks free है, यहाँ एक 2 blocks free है, इस तरह, right? So let's say all together I have 15 or 20 free blocks, लेकिन scattered है free blocks. Not more than 2-3 blocks are free contiguously. अब वहां पर मैं एक फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूं with 5 blocks or 8 blocks, I cannot do it. क्योंकि 5-8 blocks contiguous अवेलेबल नहीं है, नॉन contiguous है. So all those blocks are going waste in the form of external fragmentation. Third point है increasing file size will become maybe limitation, inflexible. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए you want to increase this file size by another 5 blocks, contiguous 5 blocks free रहना जरूरी नहीं है. So therefore limitation हो जाएगा, या हम बोलेंगे inflexible. क्यों? क्योंकि जो continuity है, contiguous blocks free रहना जरूरी नहीं है. I have to relocate the file to some other place. That may be a time consuming operation. इसीलिए वो inflexible है. Increasing file size become difficult, right? Type of access, sequential है या random? This is important. People यहाँ पर generally confuse हो जाते हैं. There are 2 types of accesses generally, sequential or random. Om Prakash, that is not correct always. Like you take memory management, fixed partitioning scheme suffers from internal fragmentation, but there is no external fragmentation. Om Prakash, your doubt. Type of access, does it support sequential or random or both? Come on, boys and girls. Very simple point. What type of access is supported by
contiguous allocation, sequential, random, or both. It support both accesses, both sequential and random both. Because it support random access, we say it is faster access. तो मतलब ये है कि the only advantage of contiguous allocation is faster access. यही एक advantage है, बाकी के सब drawback है. We have internal fragmentation, we have external fragmentation, right? And there is inflexibility in terms of increasing file size. ये सभी problems है, इसीलिए हम क्या करेंगे, linked allocation पे जाएंगे. चलिए देखेंगे quickly linked allocation पे क्या होता है. ये देखिए आप, this is the second allocation technique, linked allocation. Linked allocation, non-contiguous. यहां पर देख लीजिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा. नेम ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस. देयर इज अ फाइल बाय नेम जीप, स्टार्टिंग एड्रेस इज ब्लॉक 9, ब्लॉक 9. तो यहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होने के बाद लास्ट एंट्री में हम एक पॉइंटर रखेंगे, पॉइंटर पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक इन यूज बाय द फाइल. द लास्ट एंट्री इन द ब्लॉक विल बी अ पॉइंटर, डिस्क ब्लॉक एड्रेस, स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक इन यूज. तो 9 के बाद देखिए आप, फर्स्ट ब्लॉक इज ब्लॉक 9, then next it is pointing to some other block, 13 for example, it is missing here, right? Or 16, 13 is pointing to 16. So then a real linked list is created among blocks, real linked list. Ending block कौन सा हो गया, 21, 25, 25 पे हम क्या मार्क कर रहे हैं, -1, -1 का मतलब that is the end of file. So we are creating a linked list among blocks, we are creating a linked list among blocks. First block, block 9, second block maybe 13, maybe 16, maybe 1, so like that it goes, maybe 6 and 2. So like that it basically keeps on working. So that is the point with regard to linked allocation, with regard to linked allocation. चलिए अब इसके परफॉर्मेंस इश्यूज क्विकली स्टडी कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस पैरामीटर्स. Number 1, come on tell me, can there be a possibility of having internal fragmentation here also? क्या यहां पर भी internal fragmentation हो सकता है? Yes, because the last block जो होगा अगर fully utilized ना होगा तो that will definitely suffer from internal fragmentation. Next, can there be a possibility of having external fragmentation? Say yes or no, come on. I will write down the points, you tell. Increasing existing file size, increasing existing file size. Here naturally it will be flexible, because as long as free blocks are available, we can always increase the file size. External fragmentation nahi hoga, impossible. Impossible. Next, type of access. This is a linked list. Linked list support only sequential access, only sequential, no random. Only sequential, no random. So therefore this is slow. This is a drawback of this approach. Advantage ये है no external fragmentation, increasing file size. लेकिन इसका drawback ये है कि it can be slow because of sequential support. Last ये है, इसका और एक drawback ये है, pointers consume disk space. यहां पर हम pointer रख रहे हैं. Last entry में this is pointing to this, this pointing to this, this pointing to this. So some amount of disk space will be eaten away by pointers. Not only that, these pointers also are vulnerable. Vulnerable means exposed to danger. इसकी possibility यह है कि अगर मान लीजिए ये link breaks, for example, कोई भी एक link अगर break हो गई, pointer got corrupted, pointer got broken, then the file get truncated. आप पूरी फाइल एक्सेस नहीं कर पाओगे तो आपकी फाइल इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे. So these are the issues of linked allocation. समझ गया आप? तो इसका ड्रॉबैक ये है स्लो एक्सेस, एडवांटेज ये है नो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, और एक एडवांटेज ये है यू कैन इंक्रीज द एग्जिस्टिंग फाइल साइज. लेकिन ड्रॉबैक ये है ए गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस विल बी ईटन अवे बाय पॉइंटर्स, which was not there in contiguous allocation, और vulnerability of pointers. मतलब अगर कोई पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा तो फाइल गेट ट्रंकेटेड, फाइल आपकी कम हो जाएगी. You cannot access the full file. Yes, so this is linked allocation.
चलिए इसका एक वेरिएशन है, मैंने जैसा कहा, थर्ड अप्रोच, indexed allocation, combination of both contiguous and linked indexed allocation. What happens in index allocation? यहां पर मैं पहले एक स्टेटमेंट लिख दूं आपके लिए. Each file is associated with an index block. Next point. Index block contain addresses of data blocks. Index block contain addresses of data blocks in use by the file. अभी समझा दूंगा. A very important aspect. ये बेसिस पर हम एक क्वेश्चन भी लेंगे. Please see here on board. हमने कहा every file, Jeep is a file. एक block of disk लेंगे, like here block number 19. This is the block 19. This is block 19. So this block 19 is going to hold the addresses of the actual data blocks in use by the file. So पहला data block कौन सा है? Block 9. Second data block कौन सा है? 16. नेक्स्ट क्या है? 1. नेक्स्ट क्या है? 10. नेक्स्ट क्या है? 25. नॉन कंटिग्यूस है, लेकिन चूंकि ऑल ब्लॉक्स इन यूज आर एट वन प्लेस, उस लिहाज से हम कंटिग्यूस बोलेंगे. दैट इज व्हाई इट इज मिक्स ऑफ बोथ कंटिग्यूस एंड नॉन कंटिग्यूस. फिर से एक बात बता रहा हूं, ब्लॉक्स विच आर इन यूज बाय द फाइल एट वन प्लेस कंटिग्यूसली, but these blocks which are in use are non-contiguous. 9, 16, 1, they are not contiguous. So that's why it is a mix of both. समझ गए बात को? This is contiguous, this is indexed allocation. So this act like your index, chapter index, जैसा बुक में एक chapter index होता ना, उसी तरह this is book, file index और directory index आप बोलेंगे, right? So this is index allocation. तो यहां पर एक अच्छा खासा प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल बन सकता है. कैसे बनेगा प्लीज देखिए आप. For example, let me see how many of you will answer. Be ready to work out this problem. This block address is 16 bits. This block size is 1 KB. Assume this specification. Let me see how many of you will give me the correct answer. This block address 16 bit, this block size 1 KB. मतलब ये जो address है 16 bit का है और ये size जो है 1 KB का है. My question is, what is the maximum file size possible with an index block? Come on, I'll give you just 2 minutes of time. आप वर्कआउट करके मुझे बताइए. This is a simple 2-mark question. If index block, if this block size is 1 KB and this block address is 16 bits, what is the maximum file size possible with one index block? ये एक index block से आपकी maximum file size कितनी हो सकती है? FAT32 is a file system. Gopal Verma, in the beginning of my lecture, I already told you. You missed that part, I hope. Come on. What is the maximum file size possible? Please work out and tell. With an index block, numerical question starts like this. What is the maximum file size that we can access with one or an index block? An means one index block. एक index block से आप कितनी access कर पाओगे? Logical learner 512 KB. ललित यादव 64. What is 64? Is it kilobyte or byte or megabyte? ये बताइए please. Come on. तुषार सिसोदिया, you are saying 64. भैया आप ये लिखिए 64. Is it bytes or kilobytes or megabytes or what? What is it? Unit भी बता दीजिए. Come on, everybody is writing like that. 64. Okay, 64 kilobytes. Okay. Others also, please. Alok Pandey, what happened? Tushar 512. What 512? Bytes or kilobytes or what? What is it? देखिए, concept is very simple. Please have a look on board. What is the size of block? 1 KB. तो हमें ये देखना है, अगर ये हमने ब्लॉक ले लिया 1 KB का, it is storing addresses like this.
These are addresses, these address X, these address Y, like that. The size of the address is 2 bytes. 2 bytes. Mean this is pointing to one block X, which is of size 1 KB. मतलब एक एड्रेस से आप 1 KB डेटा स्टोर कर सकोगे और एक एड्रेस से और एक 1 KB आप स्टोर कर सकोगे डेटा. D stands for data. One address correspond to one data block of size 1 KB. Another address, another data block of size 1 KB. तो मतलब बात यही है कि हमें चाहिए how many blocks can we, how many addresses can we store in one block. अगर हम वो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए आप, ब्लॉक साइज 1 KB है, एड्रेस 2 बाइट्स का है. ब्लॉक साइज 1 KB, एड्रेस इज 2 बाइट्स. तो मतलब हम कितने एड्रेसेस स्टोर करेंगे? नंबर ऑफ एड्रेसेस दैट कैन गेट स्टोर्ड विल बी ब्लॉक साइज 1 KB डिवाइडेड बाई एड्रेस साइज 2 बाइट्स. तो ये होगा 512. तो मतलब हम यहां पर 512 एड्रेसेस स्टोर कर पाएंगे. 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, टोटल 512 एड्रेसेस. क्यों? क्योंकि टोटल साइज है 1 KB का. तो ईच एड्रेस करस्पॉन्ड टू 1 KB, राइट? ईच एड्रेस करस्पॉन्ड टू 1 KB. Each address correspond to 1 KB. 512 addresses, 512 KB. So therefore, the correct answer for this question is 512 KB. तो जिन्होंने भी 512 KB कहा, that is correct. ठीक है? So this is the concept, 512 KB. So that means if I have a file of size up to 512 KB, one index block is sufficient. अगर मान लीजिए फाइल साइज 512 KB से बढ़ के हो तो क्या करेंगे हम? और एक इंडेक्स ब्लॉक लेंगे and we will connect the first index, second index block from first index block. मतलब हम a sort of linked list of index block बना सकते हैं if the file size is more than 512 KB. अगर 2 इंडेक्स ब्लॉक हम लेंगे तो 512 प्लस 512 1 MB की फाइल हो जाएगी. 3 इंडेक्स ब्लॉक लेंगे तो 1.5 MB की फाइल हो जाएगी. उस तरीके से आप इंडेक्स ब्लॉक को कंटिन्यू कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट. आई होप द पॉइंट इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. इंडेक्स एलोकेशन, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो देन वी कैन गो फॉर आवर केस स्टडी ऑफ यूनिक्स सिस्टम, लिनक्स सिस्टम, जहां पर जो एलोकेशन फॉलो किया जाता है, ए वेरिएशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन फॉलो किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इंडेक्स एलोकेशन, मल्टी और एक्सटेंडेड इंडेक्स एलोकेशन. तो कैसे है अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. दिस इज द केस स्टडी. दिस इज द केस स्टडी ऑफ यूनिक्स साइनोड स्ट्रक्चर. यूनिक्स और लिनक्स केस स्टडी. What kind of allocation is done in Unix and Linux? Please follow. First point here I will write. Each file is associated with a block of disk, known as inode. First point. I stands for index node. ठीक है? I stands for index node. So we need to learn what is the structure of index node. अगर आप directory structure देखेंगे, please see. The directory structure of Unix or Linux is very, very simple. The directory structure of Unix and Linux is very simple. It will have 2 parts. You will have file name. Let's say my file kk.c. Then inode number. Let's say inode number 23. तो मतलब हर फाइल की अपनी inode होगी. And in Unix अगर कोई कमांड आप देखना चाहोगे at $prompt, if you want to see the inodes of every file, you can just type the command ls-i. Then it will give the inode numbers of each file in Unix and Linux. ls-i. I stands for inode. तो जितने भी आपके करंट डायरेक्टरी में फाइल्स होंगे ना, उनकी सभी के आइनोड्स ये बता देगा कमांड ls-i. यू कैन नो व्हाट इज आइनोड नंबर. तो देखिए मेरी फाइल है kk.c, उसका आइनोड नंबर 23 है. इट इज ऑल्सो ए ब्लॉक ऑफ डिस्क. उसका स्ट्रक्चर क्या है यहां पर डिस्क्राइब किया गया है. आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम गैल्विन. प्लीज फॉलो दिस. ये अंडरस्टैंड कर लीजिए. ये बेसिस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. कम ऑन, लेट्स लुक. फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिक्स आइनोड स्ट्रक्चर इज मेंट फॉर स्टोरिंग जनरल एट्रीब्यूट्स. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस.
क्या है जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल? लाइक मोड ऑफ एक्सेस, ओनर्स कौन है, टाइम स्टैम्प, डेट ऑफ क्रिएशन, टाइम ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ एक्सेस, राइट, ऑल दोस, साइज, ब्लॉक काउंट, कितने ब्लॉक्स है, राइट, इन यूज, सो ऑल दैट विल बी स्टोर्ड हियर. दीज आर जनरल एट्रीब्यूट्स. हमें इसके बारे में वरी करना नहीं है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ब्लॉक इन यूज. कौन से ब्लॉक्स इन यूज है विद दिस फाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज टू इंपॉर्टेंट, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट. कई प्रॉब्लम्स आ चुके हैं ऑन यूनिक्स आइनोड फाइल साइज कंप्यूटेशन पर. अगर आप ये समझ जाएंगे तो सच प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. तो यहां पर मैं सेम स्पेसिफिकेशंस लूंगा. assuming that disk block address is 16 bits, let us work out the question or problem on this aspect, and we'll assume disk block size is 1 KB like earlier occasion. ये basis पर हम solve करेंगे problem. Please follow. The first portion of the Unix inode structure will contain direct blocks. Maybe you can say 10 direct blocks. We'll take 10. Address of first block, second block, third block, like that. This is the last block. 10 direct disk block addresses. मतलब we are storing addresses of 10 blocks that directly contain data. देखिए आप D mark किया, data, 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 data. So each block of one size is 1 KB. This 1 KB. This 1 KB. तो मतलब कितने addresses है? 10. तो total file size कितनी हो गई हम calculate करेंगे. Total file size कैसे हम calculate करेंगे? Please see. कितने addresses है ये portion में? 10. Each pointing to 1 KB. So total file size with direct will become 10 KB. 10 KB तक access हो सकती है. So that means if my file size is within 10 KB, then this direct block section of inode structure is sufficient. अगर मान लीजिए file size is more than 10 KB, अगर हम ये assume करें कि file size is more than 10 KB, हो सकता है 10 KB से बढ़ के हो, तो हम क्या करेंगे? Second portion of Unix inode structure लेंगे, जहां पर हम बोल रहे हैं single indirect, मतलब यहां पर एक address store कर रहे हैं, address of block. It is not going to contain data. It is not going to contain data, but that will act like an index. ये देखिए आप, ये index है, index block. It is a block of disk 1 KB, 1 KB, and it is going to hold the addresses of data block. जिसा पिछले तरह हमने देखा था, it is going to hold addresses of data blocks. तो देखिए indirect, this is just like a pointer, single pointer, pointer pointing to data, pointer pointing to data 10. तो हमने अभी देखा 1 KB block में कितने addresses fit होंगे? 512, each of size 1 KB. तो टोटल फाइल साइज विद सिंगल इनडायरेक्ट कितना बन जाएगा? 512 एड्रेसेस है, ईच ऑफ साइज 1 KB. तो मतलब 512 प्लस 10 टोटल होगी फाइल 522 KB. गॉट इट? 10 KB पहले थे, अब नाउ 512 KB, राइट? 512 KB. तो 512 प्लस 10 हो जाएगा 522 KB. फिर से एक बार बोल रहा हूं. Single indirect will contain address of a data block, address of an index block that will contain pointers pointing to data block. Each data block is 1 KB. So how many pointers can fit? हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था 512 pointers can fit, 512 addresses can fit. One address is 1 KB, 512 addresses 512 KB. So 512 plus earlier 10, 522 KB. मतलब अगर आपकी फाइल साइज 522 KB तक अगर है तो आप दिस पोर्शन इज सफिशिएंट. लेकिन मानिए अगर अज्यूम कीजिए कि अगर आपकी फाइल साइज इज स्टिल मोर देन 522 KB, तो आप क्या करोगे? ये कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली एक्सटेंड करोगे. लॉजिकली कैसे करोगे? डबल इनडायरेक्ट DBA. डबल इनडायरेक्ट, ये देखिए आप सिंगल इनडायरेक्ट था, अब ये डबल पॉइंटर कॉन्सेप्ट. दिस इज फर्स्ट लेवल इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट लेवल इंडेक्स, which each entry of which will point to second level index. डबल पॉइंटर, ये डेटा ब्लॉक्स है आपके. each block is 1 KB. These are also 1 KB. So these are addresses, first level, second level. मतलब एक entry will give you access to 512 entries here pointing to 1 KB. मतलब एक entry of first level index से आप 512 KB access कर सकते हो, 1 entry से 512 KB. मतलब यहाँ पर कितने entries है आपके पास? 512 है. Each entry 512. So therefore with double indirect you can access how much? 512 into 512 KB. 512 into 512 KB. देखिए आप, one entry give me pointer to a block having 512 entries, 512 into 1 KB, so 512 KB. So one entry 512, total कितने entries हैं यहाँ पर? 512. So 512 into 512 is the total size. So 512 into 512 कितना होगा size? ये हो जाएगा 2 power 9 into 2 power 9 into 2 power 10. ये होगा 2 power 28, which is equal to 256 MB with double indirect. This is with double indirect. और यहां पर टोटल था विद द सिंगल, विद डायरेक्ट एंड सिंगल इनडायरेक्ट कितना था?
तो अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फाइल साइज कितनी होगी आपकी? टोटल फाइल साइज विल बिकम 256 पॉइंट, ये हाफ MB है, 520 KB 0.522 MB, तो 256.522 MB is the maximum file size that you can access. 256.52 MB is the maximum file size that you can access with double indirect DBA, up to double indirect DBA, direct, single indirect, double indirect. अगर इससे आप और आगे जा सकते हैं, ट्रिपल इंडायरेक्ट, 4 indirect, that logically can continue, and based on that you can calculate the file size. This is how problems were asked in earlier paper. चलिए क्विकली हम थोड़े प्रॉब्लम्स ले लेंगे बेसिस पर टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. पहले थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस ले लेंगे, देन आई विल कम टू theoretical questions, then I will come to numerical one. इसका आंसर जल्दी वर्कआउट कीजिए. दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर, आई थिंक इट इज फ्रॉम 2021 और 2022, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट पेपर का क्वेश्चन है. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, वर्कआउट. MSQ please. Consider a linear list based directory. Directory is a collection of linear entries. Implementation in a file system. Each directory is a list of nodes where each node contains the file name along with the file metadata attributes like pointers to the data blocks. अभी जैसा हमने पढ़ा. Consider a given directory by name foo. एक directory है जिसका नाम है foo. So these are the entries of directories. These are called directory entries. So this directory is by name foo. Which of the following operations will necessarily require a full scan of the directory foo for successful completion? Come on. Full scan मतलब complete पूरे entries आप read करोगे वो ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 2 mark MSQ. Which operations among the given, opening a file, creating a file, renaming a file, deletion of an existing file, और देखिए आप मैं जितने भी कीवर्ड्स को हाईलाइट किया ना वो सब इंपॉर्टेंट है. हम बोल रहे हैं सक्सेसफुल फाइल. आप मुझे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे सर अगर फाइल एग्जिस्ट ना हो, तो आप फाइल एग्जिस्ट ना हो तो आप अनसक्सेसफुल ओपनिंग हो जाएगी, अनसक्सेसफुल ओपनिंग हो जाएगी. और अनसक्सेसफुल गलत बात है क्योंकि क्वेश्चन में दिया जा रहा है सक्सेसफुल, मतलब फाइल एग्जिस्टिंग है. मतलब हमेशा वो ऑपरेशन फुल स्कैन करेगा, ये मतलब है हमेशा वो ऑपरेशन फुल स्कैन करेगा, हमेशा, every time you perform that operation it will make a full scan of the directory. चलिए अब पूरे हिंट्स दे दिया मैं आपको, ठीक है. कम ऑन आंसर्स प्लीज. रातुल्ला अंसारी ACD, नवीन कुमार A and C, Srinjoy Sarkar C. Okay. Lalit Yadav, what happened? Tushar, Chanchal, B and C. Chanchal is saying B and C. Okay. Correct. चलिए स्टार्ट करेंगे अब. फर्स्ट पॉइंट, ओपनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल. अगर एक फाइल है सिस्टम में, अगर आप उसे ओपन कर रहे हो, एवरी टाइम यू ओपन डज इट नीड ए फुल एक्सेस? बोलिए आप, डज इट नीड ए फुल स्कैन? नहीं, जरूरी नहीं है. अगर वो फाइल जो ओपन करना चाह रहे हो, आप जो फाइल ओपन करना चाह रहे हो वो फाइल फर्स्ट एंट्री पर ही अगर हो, अगर आपको मिल जाए फर्स्ट एंट्री पर ही, तो आप वाई डू यू मेक ए फुल स्कैन? वेरी सिंपल. सो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज गॉन. सेकेंड, क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल. क्रिएशन, लुक एट दैट, क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल इन फू. देखिए आप ऑलरेडी है, अब मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो मुझे चाहिए कि वो फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ना हो. इज इट नॉट? मुझे देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट फाइल नेम नहीं हो सकती है. उसके लिए मुझे टोटल फुल स्कैन करना पड़ेगा, टोटल स्कैन करना पड़ेगा. So therefore, creation of a new file in foo always need a full scan to make sure that there is no replica of that file, there is no duplication of file. ठीक है, चलिए ये हो गया.
रीनेमिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन्फो. देखिए मेरी एक फाइल है सम के, आई वॉन्ट टू रीनेम इट विथ सम अदर नेम से एक्स वाई. तो मुझे देखना पड़ेगा कि जब मैं रीनेम कर रहा हूं देयर शुड नॉट बी अनदर फाइल बाय नेम एक्स वाई ऑलरेडी इन इट. तो मुझे इसके लिए भी फुल स्कैन करना पड़ेगा रीनेम के लिए, क्योंकि जो नया नेम देना जा रहा हूं मैं वो नया नेम एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए डायरेक्टरी में. तो उसके लिए भी एक फुल स्कैन लगेगा. डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल. मान लीजिए आप ये फाइल को डिलीट करना चाह रहे हो, व्हाई डज इट नीड ए फुल स्कैन? बिकॉज ये सक्सेसफुल ऑपरेशन है, अनसक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल ऑपरेशन है. So therefore it is not necessary that every opening a file, every deleting a file, deletion of a file need a full scan. हाँ, sometime जो फाइल आप डिलीट करना चाह रहे हो अगर लास्ट में हो तो जब फुल स्कैन कर लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है एवरी टाइम. लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है एवरी ऑपरेशन, दैट मीन एवरी टाइम यू परफॉर्म. तो यही दो पॉसिबिलिटीज है जो एवरी टाइम यू परफॉर्म नीड ए फुल स्कैन. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. आई मीन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग फॉर यू. तो that is the answer. B and C is the correct answer. Correct. Okay. और एक लेंगे, इसका भी आंसर जल्दी बता दीजिए मुझे. अभी हमने देखा इस बारे में. Come on boys and girls, work out this question. In a file allocation system, which of the following allocation schemes can be used if no external fragmentation is allowed? Very good. Which allocation policies? Come on. Which allocation policies will not result in external fragmentation? So which one should I use so that there is never external fragmentation? हमने अभी देखा external fragmentation is possible with contiguous, never possible with linked and index. So therefore straight away many people are saying 2 and 3. That is correct. Absolutely 2 and 3. D. Very correct. That's a very simple one. I think one more I will take. हाँ, इसका आंसर बताइए. थ्योरी पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे. कम ऑन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. The data blocks of a very large file in the Unix file system are allocated using, अभी देखा हमने. What will you say? Contiguous, linked, indexed or extension of index allocation? बोलिए. Very simple, very clear. हमने कहा, अभी मैंने कहा multi level index or extension of index. So therefore answer D is correct, not C please. This is MCQ, not MSQ. Extension of index, not index. Extension. Multi-level index बोलिए आप. You can also call this as multi-level index. It is like multi-level index or extension of index. It is not pure index allocation. It is not pure index allocation. ठीक है? Correct. चलिए. ये भी एक आंसर बता दीजिए. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई एम टेकिंग रीजनिंग क्वेश्चंस फर्स्ट before I come to numerical. A couple of them will solve. Come on boys and girls, work out this. Yes, what is the answer? Using a larger block size, अगर block size आपका large हो, in a fixed block size file systems, block size fixed but large, okay, leads to what? There are two things. One is disk throughput and the other is disk space utilization. So if block size become large, I may have internal fragmentation, so poor disk space utilization.
लेकिन अगर ब्लॉक साइज लार्ज हो, एक डिस्क एक्सेस में आप ज्यादा डेटा रीड कर पाओगे, मतलब थ्रूपुट इज हाई. So therefore better disk throughput and poor disk space utilization, option A is correct. Option A is correct. Please be careful. Option A is correct for this question. ठीक है? I will take. चलिए इसका आंसर बता दीजिए. One numerical on this. Come on, boys and girls, please work out this numerical. Previous gate question. Let me see whether you can work out correctly. A file system with 300 gigabyte disk uses a file descriptor with 8 direct disk block addresses, 8, 1 indirect block address and 1 doubly indirect block address. The size of each disk block is 128 bytes and the size of each disk block address is 8 bytes. The maximum possible file in this system is dash. Very interesting question. 2 marks. Come on, boys and girls, please work out. Workout. Should not take more than 2 minutes. You should not take more than 2 minutes for this. What is the answer for this? 280 kilobytes, okay. Others? Very good. Sanjay Sarkar, 35K. Come on, others also please work out. चलिए, we'll start. Disk block size is equal to 128 bytes, right? Disk block address, it is given as 8 bytes, 64 bits, 8 bytes. First point. तो मतलब फर्स्ट थिंग हमें कैलकुलेट करना है, देखिए आप, ये है आपका डिस्क ब्लॉक, इट इज ऑफ साइज 128 बाइट्स, इट इज ऑफ साइज 128 बाइट्स. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट देखना है कि कितने एड्रेसेस हम स्टोर कर पा सकते हैं इन वन ब्लॉक. इन वन ब्लॉक हाउ मेनी एड्रेसेस कैन वी स्टोर? So here I will write number of addresses that you can store in one block will be block size 128 by address size 8 bytes. Each address is 8 bytes. So block size 128 bytes. If you divide it, right? कितने आएगा? 16. So in one block, my dear students, in one block we can store 16 addresses. ये पहले हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करें. 16 एड्रेसेस कैन फिट. चलिए अब आ जाएंगे. मैक्सिमम फाइल साइज हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब कितने डायरेक्ट ब्लॉक्स है? 8 डायरेक्ट. सो 8 इंटू ब्लॉक साइज. ब्लॉक साइज कितनी है? 128 बाइट्स. ये हो गया आपका
डायरेक्ट के साथ होगा साइज, दिस इज विद डायरेक्ट प्लस, अब इनडायरेक्ट का सिंगल इनडायरेक्ट देखिए आप, सिंगल इनडायरेक्ट में एक ब्लॉक ही रहेगा इनडायरेक्ट जिसकी साइज, जिसमें पॉइंटर्स होंगे 16, 16 इंटू साइज ऑफ ईच ब्लॉक 128 बाइट्स, दिस विल बी योर साइज दैट यू कैन एक्सेस विद सिंगल इनडायरेक्ट, ऐसे लिख रहा हूं मैं सिंगल इनडायरेक्ट, फिर प्लस। अब डबल इनडायरेक्ट में आ जाइए, डबल इनडायरेक्ट में क्या होगा, सिंगल इनडायरेक्ट 16, सेकेंड लेवल इंडेक्स 16 इंटू 128 बाइट्स, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज आंसर यू हैव टू वर्कआउट। तो अगर आप वर्कआउट कर लेंगे, व्हाट इज 8 इंटू 128, 8 इंटू 128 बाइट्स, 2 पावर 3, 2 पावर 7, 2 पावर 10, 1, सो दिस इज 1 KB। चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 7, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 7, 2 पावर 11, मतलब 2 KB। ये कितना होगा, 2 पावर 4, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 7, राइट, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 7, so 2 power 8 into 2 power 7, 2 power 15, 2 power 15 is how much, 32 KB। देखिए आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं 32 KB। तो देखिए आप डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 32 KB प्लस 2 KB, 34 KB प्लस 1 KB, 35 KB, so your answer is 35 KB, that's all, so 35 KB, answer is B, correct, as same। So therefore this definitely can store because my disk size कितनी है, 300 GB है, तो on 300 GB I can directly store। अगर मान लीजिए अगर आपकी डिस्क साइज वुड नॉट हैव बीन 300 GB, अगर हम ये कहते फॉर एग्जांपल माय डिस्क साइज इज 30 KB, listen boys and girls, very important conclusion, if I would have said my disk size is only 30 KB, if I would have said hypothetically, if my disk size is 30 KB, then what would have been the answer for this question? Very interesting. What would have been the answer for this question if I would have said the size of disk is only 30 KB? Come on. If only 30 KB, what would have been the answer for this problem? क्या बोलेंगे आप आंसर? Still will you say 35 KB? Still will you say 35 KB? Tell me. No. The size of disk is 30 KB. So therefore among these options, what will you say? ये options के हिसाब से क्या बोलेंगे आप size? Come on. What will you say? You will say the answer as how much? If the size of the disk is given to be 30 KB and you are with this approach you are getting your answer as 35 KB. तो जब आप क्या बोलोगे आंसर आपका क्या होगा? Come on. जब आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ डिस्क, योर मैक्सिमम फाइल साइज विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डिस्क, ऑप्शन डी लेंगे आप जब, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ए। हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट बी 3 किलोबाइट्स, कैसे आएंगे 3 किलोबाइट्स, देन डी, 3 किलोबाइट्स कैसे आएगा, राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देन यू विल से डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डिस्क, मैक्सिमम हमारी डिस्क साइज है 30 KB, सो आवर फाइल साइज विल बिकम 30 KB, दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट, सो दैट्स ए ट्विस्ट, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेंगे बिफोर वी कम ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल NAT gate question, 2 marks, come on, work out, don't make mistake। Work out similar way, the way we worked out the previous problem, work out in a similar way। Yes, come on, Chanchal, Prashant, Lalit Yadav, Pritam Swain, work out this question and tell me the answer fast।
Lalit Yadav, you should tell the exact answer. He's saying rounded off to one decimal place. That means you cannot write like 2 power 8, 2 power 16. Exact answer मुझे बताइए. Exact answer rounded to one decimal place बताइए. Data gathering कर लीजिए पहले. So we have disk block size is 4 KB, DBS 4 KB. Disk block address 32 bits. 32 bits का मतलब 4 bytes. चलिए. Then we have 12 direct. Look at that. 1 indirect, single indirect. 1 double indirect pointers. ठीक है. 1 direct है, single indirect, double indirect. ठीक है. चलिए. तो टोटल फाइल साइज डायरेक्टली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल फाइल साइज विल बिकम 12 इनटू. ठीक है. हमने कहा कि वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी एड्रेसेस कैन फिट इन वन ब्लॉक. वन ब्लॉक इज हाउ मच? 4 KB. इज इट 4 KB? यस 4 KB. एंड एड्रेस इज व्हाट साइज? 4 bytes. तो मतलब एक ब्लॉक में कितने एड्रेसेस फिट होंगे? 1K. 1K एड्रेसेस कैन फिट. इज इट नॉट? 1K एड्रेसेस कैन फिट इन वन ब्लॉक. वन ब्लॉक में 1K एड्रेसेस फिट होंगे. चलिए. तो पहले का क्या होगा? 12 इंटू 4 KB प्लस 12 एड्रेसेस ईच ऑफ साइज 4 KB. फिर उसके बाद क्या होगा? सिंगल इनडायरेक्ट. सो दिस इज, लेट मी राइट फॉर यू. दिस इज डायरेक्ट. अब सिंगल इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे हम? सिंगल इनडायरेक्ट में लिखेंगे कितने एड्रेसेस है? 1K इंटू ईच ऑफ साइज 4 KB. दैट्स इट. ये होगा आपका सिंगल इनडायरेक्ट. ये होगा आपका सिंगल इनडायरेक्ट. फिर प्लस डबल इनडायरेक्ट के लिए 1K इंटू 1K इंटू 4 KB. राइट. यही होगा ना? ये होगा आपका डबल इनडायरेक्ट. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे. 1K इंटू 1K 1M. 1M इंटू 1K इज 1 GB. सो देयरफॉर दिस फैक्टर इज ऑलमोस्ट 4 GB. इज 4 GB. And remaining terms are definitely less than 4 GB. तो roughly आप बोलेंगे file size is 4 GB because these are very less. This is 4 MB, right? And this is 48 KB. 48 KB अगर आप convert करेंगे 0.048 MB. 4 MB को अगर आप GB में convert करेंगे 0.004 GB. राइट. और इसे अगर आप जीबी में कन्वर्ट करेंगे तो दिस बिकम नेग्लिजिबल. तो दिस इटसेल्फ इज नेग्लिजिबल. 0.00 डिवाइडेड बाय 1000. 4 MB डिवाइडेड बाय 1000. So roughly you can take this as roughly 4 GB. So therefore the answer for it is 4. That's all. So that's the concept. So like that there are few more. I will leave the questions in the handout on Unix inode structure. You can work them as matter of practice. And you can solve other questions also, PYQs, based on this aspect of what we discussed today. और इसके अलावा मैं आपको ये भी अपील करूँगा, ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि you can take up other topics also which we have not covered here, like disk free space management techniques. And then there are some problems on disk structure, logical structure of disk, on formatting process. There were questions, interesting questions. So you please work out them, and those are important from Git perspective. चलिए आज के लिए इतना ही. We will continue in the next class with other aspects. Okay. Thank you. Take care. Good night. No, this is not last class. We will continue tomorrow. Tomorrow we will complete.